गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे SU6 क्वार्क मॉडल की। इन SU3 ग्रुप्स आर एक्सटेंडेड इन द फॉर्म ऑफ हायर सिमेट्री क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स becomes possible and the possibility of removing and shortcomings of SU3 enhances. In SU4, in which SU2 isospin and SU2 spin groups were combined, the extension of SU3 groups is to combine the SU3 flavor multiplet with the SU2 spin multiplets. The enlarged group in SU6, whose subgroup is SU3 flavor and SU2 spin, the SU6 classification of particles in SU3 flavor and SU2 spin subgroup of SU6, which are used to particle hadrons, baryons and mesons classifications. The SU3 flavor group has a fundamental triplet of up, down and strange quark, and each quark has two spin states. The six states of SU6 has up, down, strange, up, down and strange, which form its fundamental sectet. The model that uses these quark states to constitute and classify the mesons and baryons is called the SU6 quark model of hadrons. It is postulated that each quark has a hidden degrees of freedom called color. The SU6 quark model has no hidden degrees of freedom, and the quark model without color degrees of freedom is called the simple quark model. There exist hypothesis of SU6 quark model. There exist three particle groups called up, down and strange quark. They are fermions and have half integral spin. The characteristics of up, down and strange have their internal symmetry numbers are those of 3 of SU3. Each quark Q, their corresponding and antiquark Q bar, whose internal symmetries number are those of 3 star of SU3. Quark antiquark QQ bar combination from the mesons. Baryons and are formed by 3 quark QQQ without any antiquark. 12 quark states, up and down spin states of DUS and D bar U bar S bar are required to form the elementary particles. The quark in SU6 are static or non-relativistics. General features of SU6: the special unitary group in 6-dimensional SU6 has operator that can be represented by 6 cross 6 matrices. The lowest non-trivial representation of SU6 is 6-dimensional and is denoted by a 6. An SU6 group which is 6-dimensional is made up of an SU3 group that is 3-dimensional and an SU2 group which is 2-dimensional. The representation 3 of SU3 represent 3 quark states and 3 star 3 antiquark states. The representation of 2 of SU2 denotes 2 spin states. The representation 6 will be represent 6 quark states and 6 star 6 antiquark states. In accommodate 12 quark states, the two SU6 group represented 6 star and 6 star, similar to 3 and 3 star forming the mesons and 3 cross 3 cross 3 forming the baryons in SU3. In SU6, 6 cross 6 star equal to 36 is equal to 1 plus 35 and 6 cross 6 equal to 216 and is equal to 20 plus 70 plus 70 plus 56. जो 6 क्रॉस 6 स्टार है इसको हमने लिखा है मेजॉन के फॉर्म में, और जो 6 स्टार 6 है इसको लिखा है हमने बेरियंस के फॉर्म में, क्योंकि 6 क्रॉस 6 स्टार जो है वो QQ बार है या QQ स्टार है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजॉन्स हो जाएगा। क्योंकि जो मेजॉन्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं आपके, एक क्वार्क और दूसरा एंटी क्वार्क। इसमें एक
6 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्वार्क को, और जो 6 स्टार है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एंटी क्वार्क को। ऐसी 6x6x6 जो हमने लिखा है, तो जो 6x6x6 है वो QQQ है, यानी इसको हमने लिखा है बेरियंस के फॉर्म में। और जब हम यंग टेबुलस के थ्रू इसको हम सॉल्व करते हैं तो आप जानते हैं 6x6x6 इक्वल टू हमारे पास जो इसका कॉम्बिनेशन होता है वो 20 + 70 + 70 + 56 होता है। और जब 6x6 को हम सॉल्व करेंगे, 6x6 स्टार को जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 + 35 की फॉर्म में आएगा, and which is respectively from mesons and baryons of the SU3 groups. There are 36 generators. Operators of SU6 is represented by 6x6 matrix. Out of these 36 operators, there is one identity operators. Second is 3 operators which change the spin ordinary only, keeping SU3 quantum numbers unchanged. 8 operators which change SU3 quantum numbers, keeping spin unchanged. 24 operators which combine the spin and SU3 quantum numbers. The mesons in SU6. In SU6, the 6 quark states are Q इक्वल टू अप डाउन एंड स्ट्रेंज, अप डाउन एंड स्ट्रेंज। तो जो उनकी स्पिन होगी वो क्या हो जाएगी, अप और डाउन हो जाएगी। एंड 6 एंटी क्वार्क स्टेट्स आर Q बार इक्वल टू U बार D बार S बार, U बार D बार S बार। फ्रॉम द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Q एंड Q बार, then 6x6 star equal to 1 + 35, where 6 star is equal to 6 bar and 1 and 35 are two irreducible representation in SU6. The QQ bar from the comparison with 3x3 star equal to 1 + 8, which described mesons that 6x6 star would also describe 36 meson states, out of which the single one does not mix with the remaining 35. Since SU3 and SU2 in the subgroup of SU6, the 35 meson states can be described in terms of their SU3 and SU2 content. Where SU2 refers to the ordinary spin group, then 6 जो है हम इसको लिखेंगे 3 into SU3, 2 into SU2 और 3, 2, एंड 6 स्टार इक्वल टू हो जाएगा 3 स्टार इंटू 2 स्टार और 3 स्टार इंटू 2, वेयर ड्यू टू सेल्फ ड्युअलिटी ऑफ SU2, 2 स्टार इक्वल टू 2 एंड 6x6 स्टार इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3 स्टार इंटू 2 और 3x3 स्टार इक्वल टू 2 इंटू 2। अब 3x3 स्टार जब हम यंग टेबुलर एक्सिस इसको सॉल्व करते हैं तो ये होता है 1 + 8, और 2x2 स्टार इन SU2 रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो ये आता है 1 + 3। तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 1 × 1 + 8 × 1 + 1 × 3 एंड + 8 × 3। द फिजिकल कंटेंट इन द अबव डिकम्पोजिशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग टेबल। अगर हम SU3 की बात करते हैं, SU2 पार्ट ऑर्डिनरी स्पिन होती है और एक स्पिन ऑफ QQ बार स्टेट होता है और एक आता है हमारा नंबर ऑफ स्टेट्स, और JP जो आता है वो आता है हमारा स्पिन पैरिटी कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारा SU3 1 पार्ट होगा तो SU2 ऑर्डिनरी स्पिन हमारा 1 होगा यानी सिंगलेट होगा, और स्पिन QQ बार स्टेट हमारा 0 होगा, और नंबर ऑफ स्टेट्स जो होगा वो 1x1 = 1 होगा, और मल्टीप्लेट जो होगा इसका 0 सिंगलेट होगा। अगर हम 8 की बात करेंगे तो ना SU2 पार्ट या ऑर्डिनरी स्पिन इसकी 1 होगी यानी सिंगलेट होगी, स्पिन ऑफ QQ बार स्टेट 0 होगा, और नंबर ऑफ स्टेट्स जो हो जाएंगे इसमें 8 हो जाएंगे, और स्पिन पैरिटी कॉन्फ़िगरेशन हमारा ऑक्टेट हो जाएगा। अगर हम 1 की बात करेंगे, SU3 1 की बात करेंगे, और अगर हमारा 3 ट्रिपलेट हो जाए तो स्पिन ऑफ QQ बार स्टेट 1 होगा और नंबर ऑफ स्टेट्स 1 × 3 यानी 3 हो जाएगा, यानी इस कंडीशन में हमारा वेक्टर नोनेट होगा। ऐसी हम 8 की बात करेंगे SU3 पार्ट में, तो SU2 पार्ट या ऑर्डिनरी स्पिन जो होगी हमारी 3 यानी ट्रिपलेट होगी, और स्पिन ऑफ QQ बार स्टेट्स हमारा 1 होगा, और नंबर ऑफ स्टेट्स 8 × 3 यानी 24 होगा, और इसमें स्पिन पैरिटी मल्टीप्लेट जो होगा वो 1- होगा यानी वेक्टर
नोनेट होगा। वेयर क्यू क्यू बार स्पिन 0 implies the spin of q and q bar are anti-parallel and spin 1 implies parallel spins, and the state of QQ bar is also assumed total angular momentum L equal to 0 and J refers to QQ bar spin only. The vector J equal to 1 nonate has 27 meson states. The 3 states from vector meson singlet and 24 states from vector meson octet. The 8 states from the pseudo-scalar octet. The states rho minus, rho 0 and rho plus are the spin parity configuration is 1 minus. Isospin is 1. Third component of isospin is minus 1 0 plus 1 and hypercharge Y is 0. Mass are the 765 million electron volts per c square and main decay mode is rho equal to pi pi. In case of k star 0, k star plus, k star minus and k star bar 0, the spin parity configuration is 1 minus. Isospin is half. Third component of isospin is k star minus is minus half, k star plus is plus half, k star 0 is minus half and k star 0 bar is plus half. The hypercharge of k star minus is minus 1, k star plus is plus 1, k star 0 is plus 1 and k star 0 bar is minus 1. Mass are k star minus, k star plus, k star 0 and k star 0 bar is 893 million electron volts per c square and main decay mode are k star equal to k pi. In case of omega and phi, the spin parity configuration is 1 minus, 1 is spin and minus is represent the parity and parity is odd. Third component of isospin is 0, isospin is 0, hypercharge is 0 and mass of omega is 784 MeV per c square and phi is the mass of 1019 million electron volts per c square. The main decay mode omega equal to pi 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 and phi is the main decay mode is kk or pi pi pi. The 9 states from rho minus to phi 0 is a vector particle J equal to 1 state and each from a triplet SU2 spin. The 0 minus octet is the pseudo-scalar octet of mesons and the 0 minus singlet mesons is eta and eta is a singlet in both SU3 and SU2 spin, where omega and phi represent singlet in SU3 but triplet in SU2. Both omega and phi are the vector meson singlets. Because of these, the vector mesons nonate instead of a octet and a singlet is considered. The mesons in SU6 can be constructed by 6 cross 6 star, which represent in the form of a pseudo-scalar singlet, a pseudo-scalar octet and a vector nonate of physical mesons. There are mesons which throw a number of separate multiplet, singlet, octet and nonate, but have identical 0 quantum numbers in third component of isospin and hypercharge. The raises the meson state observed as physical third component of isospin and hypercharge is 0 particle and pure states or mixed states.